I'm delighted to talk about this wonderful novel by Rehan Alavi, تعبیر की तलाश में. This was launched at the Islamabad Literature Festival, held on the 25th of April 2015, and the event was a very well attended and a very popular event that was enjoyed by everybody. It had some wonderful speakers. Mr. Rehan Alavi himself was there, and the famous Urdu writer Mustansar Husain Tarar, and the Australian High Commissioner, His Excellency Peter Heyard, was also present at the launch. And we are very happy that we were able to launch this book at our festival, and we hope that it will be widely enjoyed by people in Pakistan and all over the world. It's a very sensitively written novel, and we are very happy to have been able to launch it. उन सब के लिए जो हमारे माशरे में जो कुछ सुबह शाम हो रहा है, हम अपने ज़राए अबलाग में जो कुछ देख रहे हैं, टीवी स्क्रीन्स पर जो कुछ देख रहे हैं, अपने घरों में जो कुछ देख रहे हैं, सुनने वाले, पढ़ने वाले और देखने वाले, उनकी आंखों के सामने वो कुछ आ सके जो बहुत से दरीचे बंद पड़े हैं, उन कालीनों के नीचे जो गंदगी छुपी हुई है उसको सामने लाने की कोशिश की है, ताकि नज़र आए कि हम सिर्फ एक रियाती माहौल में नहीं रह रहे, हम तबीज़ कालीनों में नहीं रह रहे, बल्कि इसके नीचे बहुत कुछ है हमने दिखाया नहीं। मैं ये समझता हूँ कि हमारे जो दोस्त बाहर गए हैं, जो इस्टेब्लिश अदीब थे, जब उन्होंने बाहर जाके लिखा है तो वो उतनी ताकतवर चीज़ें नहीं लिख सकते। अलवी का कमाल ये है कि इन्होंने एक बिल्कुल मुख्तलिफ चुना है सब्जेक्ट जो, और इन्होंने वो सब्जेक्ट चुना है जिसको ये 20-25 साल से एक्सपीरियंस करते आए हैं। इसीलिए इनके जो सब्जेक्ट में जो गहराई है पूरी, मतलब एक फ़िलासफ़िकल उसमें गहराई है। लेकिन मेरा ख्याल है कि उर्दू में ये पहली काविश, और इनकी बिल्कुल शमीम ने इनके बारे में लिखा है कि भाई कतई तौर पे ये अंदाज़ा नहीं होता कि इनका पहला नावल है। I don't think it is a translation, which is one of the fascinating things about this book. Rehan clearly is bilingual, and he's written the book in Urdu, but the themes, of course, are ones of the diaspora. I think the experiences that he recounts, some of them are particular to Australia. The boat journey of the asylum seeker. It picks up some of the aspects of Australian life in the parts set in Australia, but also, having lived here 3 years, many of the settings in Pakistan are also very familiar. It also reflects Rehan's background as an IT industry person, and the battle between two corporations is in IT and deals with IT issues. So, as with most good literature, it draws extensively on the experience of the author. But enjoyable, topical, a strong and interesting narrative,
and something that obviously reflects the author's background. And something I think from an Australian perspective, it's great to see somebody writing in Urdu from Australia, but also being able to present the same story, the same narrative in his own voice as he uses it in Australia. Thank you very much. रेहान अलवी साहब के नावल ताबीर की तलाश में को कई दफ़ा पढ़ा है और हर दफ़ा मैं इससे मुतासर हुआ। जब 55 साल का लिखने लिखाने पढ़ने पढ़ाने का तजुर्बा है और मैंने मुख्तलिफ़ कॉलेजों में और यूनिवर्सिटी में पढ़ाया है। मेरा ख्याल है कि इससे बेहतर नावल जो है ना जी, जिस अंदाज में ये स्किलफुली नावल लिखा गया है, मेरी नज़रों से नहीं गुजरा। ये अछूता नावल है, मौजू के एतबार से भी, ज़ुबान और बयान के एतबार से भी एक। और खुशी की एक मज़ीद बात यह है कि इस नावल पर लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी में एमफिल का थीसिस भी लिखा जा रहा है। Beyond the dreams. Well done, well done. No doubts, it's a great work of literature. When I received the text of the book for designing its cover, I was really amazed. The subject was very powerful. The theme was very powerful. Soil, land, and human relation. It was very difficult for me to give the real effect on an image of the title, but I tried my best. आप इतनी अच्छी उर्दू बोलते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में आपकी आवाज़ सुनी जाती है, बल्कि पूरी दुनिया में सुनी जाती है जो आप ऑस्ट्रेलियन रेडियो से बोलते हैं। आप उर्दू बहुत अच्छी लिखते हैं। सिर्फ मैं ये कह सकता हूँ कि खुदा करे ज़ोरे कलम और ज़्यादा। रेहान अलवी's book Beyond the Dreams और ताबीर की तलाश में is a very interesting, informative and original contribution to literature. He talks about people smuggling, but he talks about places in Pakistan along the way and its connection to Australia. He gives us an insight into how people feel, the games they play, but also the problems that they encounter, how they live, how they suffer, and what makes them look for alternative places. It's a beautifully written book in Urdu, and in English it gives you an insight which I think our readers would not be able to find unless they had a book like the one written by Rehan Alavi. अब अगर मैं कुछ उर्दू में कहूँ, ताबीर की तलाश में बहुत खूबसूरत किताब है। इसके लिखने का अंदाज मुनफरद है और सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये ऐसी उर्दू में लिखी गई है जो बहुत कम लोग लिखना जानते हैं। तो रेहान अलवी का बहुत बहुत शुक्रिया और उन सब कैरेक्टर्स का शुक्रिया जिनकी वजह से इन्होंने इतना खूबसूरत नावल लिखा। And with that, I hope every one of you enjoys this book, and I wish I was there. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, this evening we are also recognising the achievements of Australian alumni in their field of specialisation.
makes frequent trips to Pakistan, but he's here at the moment mainly to launch a book he has written, a novel titled Beyond the Dreams in English and Tahir Ki Talash in Urdu. Forgive my Urdu pronunciation. So the formal launch for this will be at the Islamabad Literary Festival held later this month. But I wanted to take this opportunity to recognise Rehan and his achievement in writing the first novel in both English and Urdu. Rehan, if you'd like to join us up on stage, please. In history's page, let every state advance Australia.